South Gujarat Productivity Council office bearers, Shri Bhadresh Bhai, Shri Ashish Bhai Gujrati from the Chamber of Commerce, Shri Gaurav Rai, Shri Nikhil Madrasi, Gaurav Luthra, all other friends on the side. Dear students, ladies and gentlemen, when Nikhil Bhai was talking about people on the dais, when he was talking about me, I had very lurking suspicion whom he was talking about. He was talking about Saraswati being very benevolent. And he was also talking about Lakshmi. When he talked about Lakshmi, I was relieved he is not talking about me. But then he confused the things again. आमतौर पे जब चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो शब्द बहुत तरह के आते हैं, लेकिन अब मैं इतना अनुभवी तो हो चुका हूं, तेरी सांसों की धड़कन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। But thank you very much for the kind words. My friend Girish Luthra was called here. He is the doer. He has done some very extraordinary and fantastic things here in the field of innovation, in the field of industry, in the form of textile parks, and many more. Very lively person, and only a lively person, mind you, can be productive. Productivity ultimately is a function of input and output. What kind of resources, how many resources, how much of material, labor and capital you are putting in and what you are getting out. The idea came into the field of management for the first time in the form of principles of scientific management in the year 1908. Frederick Winslow Taylor, he was an engineer in America, and he talked about productivity, efficiency of production, how to use your labor, your machinery, and your material in such a way that your productivity is maximum. But gradually then people started finding out dealing with material, labor, and maybe capital is not enough. You have to include man also into this. Labor included man, but then dealing with man has many views and many kinds. It's a whole spectrum how you deal with human beings. This world has around 190 countries now, which are the most productive countries in the world. Undisputedly, 3-4 nations figure on the top. Norway, Switzerland, Luxembourg, Ireland, Singapore. And mind you, these are small countries, but US also figures among the top 10. So is Germany. Where do we figure? I believe in 2022, India's rank was 64th. We are not really doing very badly, but then there are 63 nations who are doing better than us. Put it more closely, in more focus. We happen to be the 5th largest economy in the world today. We have recently crossed, first we crossed Italy, then we crossed England also. Our total GDP amounts to close to $2.7 trillion now. But we can't look back. Why we can't look back? Simply because we are the largest nation on the earth today. We are close to 143 crores of us. And China's population has started declining. Our population is still going up. And we are at the same level in 2023. Obviously,
The graph is going to be like this. China is coming down, India is going up continuously. And we can't be happy being the 5th largest economy in the world, $2.7 trillion. We have to aim at $3 trillion. We will not be crossing Germany. Germany will cross when we go almost close to $4 trillion. And then our next target will be Japan, a much smaller nation. Their economy is close to $5 trillion. And then there's a big shot. Big gap. China is almost $15 trillion. And then at top of the heap is the US, $21 trillion. Now productivity is important. If we want to really catch up with the nations, we have to increase our productivity. We have to start thinking big. You are engineers here, young people. In fact, I don't see any old man in this hall here. The one who is behind this camera, he is an epitome of productivity. Sometimes he started coming to me like a senior citizen. That in one of the function he was doing what Nikhil Bhai Madrasi was doing here. He was comparing the function also. After comparing, he goes behind the camera. And then they had an entertainment program. He sang a beautiful song. So now this is what is productivity. We are iterative. We are the largest nation on the earth today. And we are producing close to 65 lakh graduates every year, of whom 15 lakhs are engineers, 90,000 are MBBS doctors, 53,000 other Ayush doctors in Ayurveda, in homeopathy, in Unani. This kind of numbers are mind-boggling, but then there comes a bitter truth. Last year, employability index told us that close to 98% of the engineers we produce are unemployable. Now you put unemployable people on a job and you get less and less productivity. We have to look deep into us. And let me tell you, this is not only an institutional problem, this is not only a national problem, this is also an individual problem. None of us is second rate. Human is perhaps the greatest and most fascinating creation of nature, God Almighty. Each of us is endowed with excellent talents, excellent capabilities, intelligence, wonderful senses. 5 of them. 6th sense is money. God is being kind to us. Gradually we are becoming more lucky with money. And then we end up making a mess of this fantastic resource. When we talk about our comparative advantages, we talk that labor cost in India is very low. And this is our big comparative advantage. Our labor cost is low because our productivity is also very, very low. In order to increase our productivity, we have to improve the quality of our human resources. Human resources, जैसा मैंने बताया, human तो आ जाते हैं, ऊपर से कुदरत बच्चे को पैदा करती है. कुदरत कभी ऐसे बच्चे को पैदा ही नहीं करती जिसको पैदा करने लायक जो नहीं होता है. I have not really come across any child, any person. Now I look back. When I was a student, I thought I was at the top of my class. And I also used to wonder why some of my colleagues fail on various subjects. Some of them fail in mathematics, some of them they fail in English, some of them fail in social sciences. I could not really understand, but now looking back, I'm almost nearing 60 now. I understand. It was not the students who were failing. It was our teachers, it was our education system that was failing. When I look back at that, when I try to revisit those friends who are failing different exams, and I find some of them are simply brilliant. One of them, his name was Dhamal, real name might have been anything, but Dhamal was the most mischievous student of our class. And he could jump from any height, from any tree. He could jump into the village pond with a perfect dive. Now who says he was a failure? The teachers kept telling him. He left before he reached 10th standard. Unfortunately, the society lost a wonderful resource. Another of our students, he was so expert at climbing trees.
because the teachers repeatedly kept telling him, you are poor at this subject and you are poor at that subject. Unfortunately, the system is so unfortunate. आप मछली को पेड़ पे चढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, उनको आप दरिया में डालते हैं, बोलते हैं इसमें तैरो। No, they are not meant to swim. Or machli is not meant to climb the trees. This is the unfortunate aspect of our society. I tried to go deeper. Luxembourg, Ireland, Norway, Switzerland, Singapore, they do not fail their students. They try and identify the unique talents each person has. Now coming closer to the Chamber of Commerce and the Productivity Council, आपकी फैक्ट्री में जितनी लेबर है, उस लेबर को आप स्टडी किए बिना आप उसको कैटेगराइज कर दें, ये A टाइप वर्कर है, ये B टाइप है, C टाइप है. You also look into the fact that they have been differently trained, they are differently educated. And thirdly, perhaps you are putting at the wrong job. There is never a poor quality human being. There is never a poor quality labor. And poor quality labor is one who has been placed in a wrong job at the wrong time. This, as a society, we have to learn. And then there are many among the young students who tend to grieve, who tend to complain. मैं क्या करूं? माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं फैक्ट्री लगा देता. मेरे माँ बाप ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है. I remember my colleagues, some of them, they used to complain. I also used to feel angry with my mother because my mother used to tell me about my father's dreams of me, and I started telling them, गांव में रह के आप लोग बच्चों को इतनी टेंशन क्यों देते हो? आप लोगों ने जो कुछ किया वैसे ऐसा ही कुछ हम लोग भी कर रहे हैं. But then I found I had a friend, Ajay Kumar Tomar, he started telling me, Ajay, ये पेरेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं. ये हम लोगों को सुखी नहीं रहने देते. ये लोग हमेशा बताते रहते हैं कि तुमने जो अचीव किया है वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो बहुत कुछ अचीव करना चाहिए. Anupam Mukherjee was very bitter about his parents. I was also bitter. And now, gradually, I became more and more grateful to my esteemed father, my late esteemed father. आप अपने आप को पहचानिए. You try to recognize yourself, try to recognize your talents, and refuse to accept anybody who tells you that you are second class or you are third class. Some teachers also must be here. Please never tell a student that he is second or third class. I tell the necessary sitting on this side of the dais. Please never tell any labor that you are second grade, you are third grade. You are not doing well. Because we somehow we are unable to recognize right kind of talents. We are unable to put him in right kind of job. As a result, the productivity suffers. Productivity is not only a scientific issue, it is deep down here. And after going deep into this subject, because it has been my subject, and it continues to be my subject. The other day, a friend who had come from Delhi, he is in the Bureau of Police Research and Development, he started telling me, he was comparing Ahmedabad and Surat, and he told me what is Ahmedabad's population. I told him it's close to 84 lakhs, 8.4 million. And what is Surat population? I told him it is close to 8 million. And he says, how many policemen does Ahmedabad have? I told him 15,500. And then he asked me, how many policemen do you have? He was trying to reach somewhere. I told him it is 5,600. He says, with the similar kind of population, how can you handle the city with 5,600 people? And I told him, I love my men, I love my policemen. And I never complained to the government that I have only 5,600 people. मैं इसको देखता इस तरह से उनके 5,600 कुदरत के करिश्मे मेरे पास है, मेरी टीम में. हर आदमी कुदरत का करिश्मा है. और mind you, I have never gone to Gandhinagar and complained even to the Honorable Home Minister who belongs to Surat, who loves Surat very much. I have not told him मेरे पास मैन पावर की कमी है. आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कुछ और करिश्मे और मिल जाएंगे तो मैं कुछ और कर पाऊंगा. But we have never complained, we have lesser number of people. Productivity की बात है. Productivity क्या है? Productivity, when I started thinking deep into this, mind you, I was a student of mathematics, then I have been a student of management also, and thereafter I have been a student of life, I have been a student of society. Productivity
में पहचानने को मिलता है। चूज लेस। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, सुबह एक फंक्शन में गए, जैसे आज मैं आया होता हूँ, दोपहर को ऑफिस में जाकर कुछ और करेंगे, आफ्टरनून में कहीं और फंक्शन होंगे, शाम को कहीं और रिबन काटेंगे, और इवनिंग में फैमिली के साथ कुछ और प्रोग्राम है, उसके बाद फ्रेंड्स के पास जाकर कुछ और करना है। ऑफिस में भी वो एक काम से दूसरे काम पे स्किप करते रहते हैं। दिस इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। चूज लेस। आइडेंटिफाई आप किस चीज पे बेस्ट हैं, और वो एक दो काम आप चूज कर लीजिए कि ये काम के लिए मैं कट आउट हूं। मेरा मेंटल एप्टीट्यूड, मेरा एटीट्यूड, मेरी एबिलिटीज, मेरा नॉलेज, मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन सारी ओरिएंटेड है ये एक दो चीजों के लिए, और इन चीजों के साथ मेरी आत्मा खिलती है। आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 8-10 सब्जेक्ट होंगे। हर स्टूडेंट का कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको पढ़ने में थकान ही नहीं लगती। आप कोई बुक उठा के देखें, उसको कवर टू कवर पढ़ने में आपको टाइम ही नहीं लगता। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अपना फ्लुएंटली फ्लो नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग। जिंदगी के लिए जो स्कूल मैंने सीखा है, जो मंत्र मैंने सीखा है, चूज लेस एंड देन ऑब्सेस। उसके बाद उसके पीछे पागल की तरह पड़ जाओ, उसको छोड़ो मत। When I came to Surat, the first thing I noticed, most of the things, drug was the problem, and we started with the slogan, "No drugs in Surat City." उसका लोगो भी हमने कोर्ट की स्टैम्प का बना दिया, "No drugs in Surat City." I don't mean कि आज सूरत में ड्रग नहीं है, but each and every officer, starting from the Commissioner of Police, right up to low Rakshak and constable, everybody knows that this is our priority. We will not let anybody safely get into the business of selling or consuming drugs in Surat. उसके बाद क्राइम कंट्रोल करना था। क्राइम कंट्रोल पे हमने काम किया सिस्टमेटिकली, and I can show you the graphs how crime started going down, how our detection percentage was going up, because I tried to restrict myself. इस restriction में यदि किसी ने मुझे repeatedly distract किया है, it is my friend from the Chamber of Commerce. Like when they came to invite me for this function, I asked them, "You are the South Gujarat Chamber of Commerce, and you are talking about productivity, and you are inviting a police officer. What will I come and do?" But perhaps they are wiser than me, and through them I have been able to learn many things about textiles, about diamonds, about management, about the latest trends in economy, latest trends in finance. So it is always a give and take, Ashish bhai. You don't have to really bother about my words. It's a give and take. When I came here, when I look at you, and I feel energized, I feel energetic. इरादे बांधता हूं। हर आदमी सोचता है ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। Do not let your mind play games with you. Choose less and then obsess. Put all your talents, your energy in a laser-like manner. Light emission by stimulated emission of rays. Laser, like a laser, when you go after your work, when you go after your vision, go after your goals, you can reach anywhere. I remember some of the people who did wonderful about their life, who reached the pinnacle of productivity. All of you must have heard of Steve Jobs. He was born to parents who were unable to take care of him. उसको खिलाने पिलाने का पैसा नहीं था, उनको चिंता थी कि बच्चा पढ़ेगा तो इसको पढ़ाने के लिए तो हमारे पास कॉलेज में देने की फी भी नहीं है। And they started finding out that a couple who was willing to adopt Steve Jobs. Steve Jobs को adoption में देने के बाद पेरेंट्स ने फिर उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। जो नए पेरेंट्स थे वो भी बहुत रिच नहीं थे, उन्होंने उसको एक कॉलेज में, अमेरिका में रीड कॉलेज में वो गया। रीड कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि जो मैं जिंदगी में कर सकता था वो यहाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ के उसको आत्मा और परमात्मा को तलाश करना था। परमात्मा की तलाश में आज भी इस दुनिया में आदमी निकलता है तो वो इंडिया पहुंचता है। तो स्टीव जॉब्स भी इंडिया आया
किसी तरह से, and he started seeking the meaning of life. उसको कुछ दिखा होगा. He went back to America, called Bosniaki, his old college time friend, started Apple, and everything is a well-known story thereafter. Wow. Never complain how your family has not really supported you and how some lucky friends, families have been able to support them. Mind you, ये एक स्टोरी नहीं है स्टीव जॉब्स की, यहाँ बहुत सारे स्टोरीज हैं. All of you have heard of धीरूभाई अंबानी. धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई थे, अहमदाबाद में थे. मैं बहुत साल तक अहमदाबाद में पुलिस ऑफिसर रहा हूँ. रमणीक भाई अंबानी मेरे दोस्त थे और मैं उनसे बहुत बार कुरेद के पूछता था. आदमी बताता कुछ नहीं है, आपको निकालना पड़ता है. Never complain to your teachers कि टीचर्स ने क्या नहीं सिखाया. टीचर्स को भी अंदर गोदा मार के उनमें से निकालना पड़ता है, तो स्पेशल उनके अंदर है. तो रमणीक भाई से जब मैं पूछता था कि धीरू भाई बचपन में कैसा था, बोला कि आम आदमी तो चबराट क्यों होता, चबराट क्यों होता. फिर जूनागढ़ में पढ़ने के लिए आया बहाउद्दीन कॉलेज में. उसके बाद स्कूल में जब छुट्टियों में जाता था, कोई भी मेला आसपास लगता था तो वहां जाके कुछ खरीदता था, कुछ बेच देता था. और उसके बाद उसको लगता था कि यहाँ मजा नहीं आ रही है. स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और रमणीक भाई से बोला कि एक बार मुझे यमन पहुंचा दो ना, कहीं भी विदेश जाके कुछ करना चाहता. बोलता कि हम दोनों वहां गए. एक पेट्रोल पंप पे जॉब मिला. पेट्रोल पंप पे भरते भरते उसको लगता था कि ये जिस कंपनी के साथ मैं ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करता हूँ, ऐसी कंपनी मैं क्यों नहीं खोल सकता. नाउ दिस इज द जेनेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी. उस आदमी ने ही गेम बैक कर दिया. इंडिया आके उसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया. कुछ भी एक्सपोर्ट किया. ये उसने मिट्टी भी एक्सपोर्ट की, उसने हर चीज एक्सपोर्ट की. फिर याद किया, फिर सूरत से इधर उधर से चीजें खरीदते थे. करते करते और आज जब उसने रिलायंस की लार्जेस्ट रिफाइनरी जामनगर में एस्टेब्लिश करनी शुरू की, आई हैपेंड टू बी द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस देयर. उनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी एंड ही वाज ऑलवेज वेरी फाउंड ऑफ मीटिंग ऑफिसर्स. He called me and my wife was the municipal commissioner. We went and met him. We spent some time with him and he had stars in his eyes when he was remembering his childhood. तो सारा मैजिक वहाँ गरीबी में था. जब आपके पास स्ट्रगल करने की सिचुएशन है, जब आपके पास गरीबी है, जब आपके पास और कुछ भी नहीं है, God has given you eyes and a brain. Dream and dream big. प्रोडक्टिविटी का जेनेसिस वहाँ है. प्रोडक्टिविटी टेलर ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए थे, वो तो 115 साल पुरानी बात हो गई. उसके बाद फैक्ट ये है कि प्रोडक्टिविटी के रूल यहाँ है, चमक यहाँ है, करंट यहाँ है. आप किसी आदमी को अपनी कंपनी के काम के साथ प्रॉपर्ली एजुकेट और ट्रेन करके अपनी कंपनी के गोल के साथ उसको एसिमुलेट कर लीजिए, मैजिक विल हैपन. दिस इज व्हाट सिंगापुर हैज डन. सिंगापुर में एक बार डी क्वान की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा. Mao Zedong had come to visit Singapore, and Singapore is essentially a Chinese country, a Chinese society. He was asking Lee Kuan, how did you change Singapore so fast, so early? And he told, good quality education and meritocracy. Merit should be the only criteria on the basis of which a person will get anything in society. Mao Zedong did not reply. He was also asking us, आपने पूरे सिंगापुर को इतना क्लीन कैसे किया, अपने सोसाइटी से करप्शन कैसे खत्म किया. एंड ली क्वान वाज अ वेरी articulate person. He was giving him very laconic short answers. Mao Zedong went back to China and within 15 days a high level delegation came to Singapore to study everything, all claims Lee Kuan was making. And mind you, मैं आपको बात बता रहा हूँ करीब 30 साल पहले की. और आज चाइना में जो रिवॉल्यूशन हो रही है, 1980 में इंडिया और चाइना की प्रोडक्टिविटी का लेवल सेम था. हमारा जीडीपी का साइज भी सेम था. हमारी पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट सेम लेवल में थी. और आज वो वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी $15 ट्रिलियन की हो गई है. हमने भी जानना शुरू किया है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज एक्सहॉर्टिंग द होल नेशन टू थिंक बिग. $5 ट्रिलियन which is a big dream he's showing to the whole nation. He has become the president of G20. You read it there. He is the president of G20, and G20 has all the most powerful, richest nations in the world in that club.
One has to start thinking big. चाइना ने जो कुछ भी फॉलो किया वो उस ब्रेकफास्ट पे भी वहां से जो बातें पूछी थी, चाइना स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। आपको शायद पता होगा 2000 BC में चाइना हैड अ सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, जहां बच्चों का एग्जाम लिया जाता था, जो सबसे शार्प बच्चे थे उनको उसके बाद गवर्नमेंट में पोजीशन दी जाती थी, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड द मेडलियंस। और आज भी चाइनीज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पे वर्कलोड इतना होता है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। माँ जोआ की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। There's a mother in Chinese mother in US who told how she was very very tough with their children when they were young. चाइना पूरा इस तरह से मेहनत कर रहा है, पागलों की तरह में, they are obsessive। और इसी ऑब्सेशन ने जब उनको ये महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी में चाइना हमसे बहुत आगे है, a lot of students went to America, sought admissions in the top universities including the Ivy League, and then the system drew them back। और आज 5G में आप लोगों को पता है which is the leading nation in 5G, China, it is not America। And in most of the things they are obsessed to be the best in the world, and this is high time when we should also be obsessed in reaching 5 trillion, 10 trillion and 20 trillion and why not 30 trillion within your lifespan। When I was growing up in a village, I was fond of reading newspapers, और मुझे ये लगता था कि जो चीजें मैं न्यूज़पेपर में विदेशों के बारे में पढ़ता हूँ वो हमारे आंखों में। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, तब भी यही सुनने को मिलता था कि हम अभी भी बैकवर्ड हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इज 50s और 60s में इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैगिंग बॉल लेके जाते थे अमेरिका के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, मैक्सिको के पास, गेहूं दे दो, चावल दे दो, ताकि हम अपने टीविंग मिलियंस को खिला सकें। इंडिया की कमाल की अचीवमेंट ये है कि विद इन 2 decades, 60s and 70s, we became self-sufficient. If we can become self-sufficient in 2 decades, we can be the leading industrial nation in the world within the next 2 decades. And this is what I want to try to say. आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको अपने अंदर की ताकत के साथ साथ दूसरे के अंदर की ताकत को भी पहचानने की क्षमता आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। जानने से कुछ नहीं होता। त्रेश भाई कितने भी लेक्चर करें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होता। आई एम नॉट एंगेजिंग इन हाइपरबोल। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप ये बताइए कि गीता जैसा ग्रंथ भारत में ही हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। भारत के बाहर तो किसी ने गीता नहीं लिखी। और मेरे ऑफिस में कम से कम हर वीक 10 आदमी मुझे गीता भेंट में देके जाते हैं। जो भी आता है, क्योंकि आई डोंट अलाउ एनीथिंग एल्स, बट दे से इट इज ओनली अ बुक एंड दे कम एंड दे ट्राई टू गिफ्ट मी गीता। नाउ आई हैव स्टार्टेड वेरी पोलाइटली एंड वेरी फर्मली डिनाइंग आई विल नॉट एक्सेप्ट गीता। तो कुछ लोग नाराज होते हैं, मुझसे गीता नहीं ले रहे। मैंने कहा तुमने पढ़ ली? यदि इस देश में गीता को पढ़ा होता तो गीता तो एक ही चीज तो बोलती है, कर्म करो। कर्म करना क्या है? प्रोडक्टिविटी है। वही तो हमने नहीं किया और हम गीता का सारा दिन नाम लेते रहते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं। जानने से कुछ नहीं होता। मैं रिपीटेडली एक चीज, मुझे कबीर जी की बहुत पसंद है, जो उन्होंने करीब 600-700 साल पहले कही थी। मन जानत सब बात। मन तो सब कुछ जानता है, बुद्धि ने तो सब जान लिया। इससे होता क्या है? टेलर ने जो कहा वो भी हमें पता है, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड भी हमें पता है, फ्रेम ने भी जो कहा वो भी हमें पता है। दुनिया भर की बुक्स आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ आप पढ़ लीजिए, कुछ भी उससे होता कुछ नहीं है। इट चेंजेस नथिंग। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, माइंड यू, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो होता है, यहां जब आग लगती है और यहां जब आग लगती है, पेट में आग लगती है और दिमाग में जब धुआं उठता है, आग का ज्वाला उठती है, उससे कुछ होता है। कबीर दास जी ने कहा था, सिंपली
We have to inculcate the ability to understand the essence of these wonderful books like Gita, books like Ramcharitmanas, books like, you can name any book. चाणक्य के अर्थशास्त्र को आजकल फैशन हो गया है, अर्थशास्त्र की बहुत भेंट दी जाती है। अर्थशास्त्र को समझते तो आज हिंदुस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्ल्ड की रैंकिंग 132वीं ना होती। अर्थशास्त्र और गीता को यदि समझ लिया जाता तो हम टॉप के 4-5 नेशंस में होते, जो मैं बता रहा था, तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, उन्होंने समझ लिया। We need to understand, work hard, work smart, choose less, and then obsess. I wish you all a wonderful time, and I also wish that someday in your lifespan you will see India as one of the leading nations in the world. South Gujarat Chamber of Commerce will keep inspiring you, keep continuing to give you new ideas. I wish you all a bright future. I wish you all the very best. Thank you. Jai Hind. Sir, thank you very much for the inspiring speech report. इतना विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 5 मिनट और दूंगा, बाद में ये इनोवेशन सेशन खत्म होगा। मैं 4 ऐसे दोस्तों को यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ जो आपको जज करने वाले हैं। सबसे पहले कमिश्नर साहब ने जो बताया ना एक बंदे के लिए कि वो बंदा यहाँ पर मेरे तरफ कॉम्पेयरिंग करता था, बाद में वो वीडियोग्राफी के लिए चला गया और बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो उनका एंकरिंग भी वही करता था। वो वही बंदा है जो आज वही काम कर रहा है, जो आपको जज करने वाले हैं। उनको मैं प्रेजेंट करूंगा, मंच पर आइए। सूरत के जाने वाले नाट्यकार, लेखक, दिग्दर्शक, एंकर एंड बहुत कुछ, नरेश कापड़िया। हमारे साथ जो दूसरे जज हैं वो है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी। कुछ और कहने की जरूरत नहीं, इनका उपनाम प्रोडक्टिविटी रख देना चाहिए। यस, नरेश भाई का नाम बदल के नरेश कापड़िया की जगह नरेश भाई प्रोडक्टिविटी वाले ऐसा कर लेंगे। दूसरे जो बंदे हैं हमारे, जो मैंने बोला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, प्रोडक्टिविटी काउंसिल के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, पैटर्न ट्रेडमार्क क्षेत्र में एक जाना माना नाम और बहुत संक्षिप्त में बोले तो अभ्यासु और प्रखर अभ्यासु विद्वान डॉक्टर अनिल कुमार सरावती। सूरत में एक तीसरे शख्स का नाम मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना नहीं भूल सकता, क्योंकि वो बहुत जाने माने हैं, जिनकी विद्वता के बारे में आपको जब वो जज करेगा, जब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या कितना बड़ा योगदान है। वो है उमेश भाई भट्ट। सर एक और चौथे जो हमारे शख्सियत है वो है निशा आनंद जी। वो भी लेखक है, एंकर है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है। तो निशा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इन तीनों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और निगम राणा हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर को विनती करता हूँ कि आभार विधि प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण श्री अजय कुमार तोमर जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, गिरीश भाई गुप्ता जी, केतन भाई पंचाल, जिन्होंने हमें स्पेस दी, हमें यहाँ कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी और अच्छे से हम यहाँ आपकी कंपनी से करेंगे। दिमाग से बोलने वाले कि कुछ कारण तो नहीं आ सकते हैं। और गौरव भाई जो आपके स्टूडेंट चैप्टर के कन्वीनर, उसे खूब खूब धन्यवाद देने को। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिन्होंने ये आज तक अभी तक जो भी है हम उसे आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट महेंद्र भाई गलाल जी, मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट आशीष गुजराती जी, निखिल भाई मद्रासी जी, हमारे सेक्रेटरी और सम्मानित महानुभाव, अब हम इस इंस्टीट्यूट का आभार व्यक्त करते
करते हैं और साथ ही हमारे मीडिया टीचर और प्रोडक्टिविटी काउंसिल के सभी अतिथि मेंबर का हम धन्यवाद करते हैं और हम आप अच्छे से अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन का लुत्फ उठाए और अच्छे से अच्छे सीख के जाइए। जो हमारे कमिश्नर साहब आपको खुद के अनुभव से आपको क्या क्या कर सकते हो, मतलब हमें भी इंस्पायर होना चाहिए, खुद में